Class 8, History, Chapter number 3, Ruling the Countryside. As you have already learned till the Ryotwari system in my previous video, I am continuing with the new topic, that is the impact of the land settlement. It is given on page number 31 of your book. Students, the land revenue settlements introduced by the company impoverished the peasants. What do you mean by impoverished? Means किसी को और lower और poor बना देना. Land is now became sellable. Obviously, sellable means वो बिकने लायक था. जो land थी उसको sale किया जा सकता था. Which could be bought, sold or mortgaged. Meaning of mortgage means किसी को गिरवी रखना. गिरवी रखना इन सेंस कि कोई वेल्दियर है, कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हम उसके पास अपनी लैंड को मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट में कुछ मनी जो है वो बोरो कर सकते हैं उनसे. दिस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द रूरल लाइफ एंड इकोनॉमी. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हाउ द पोजीशन ऑफ द पीजेंट्री मीन्स द पीजेंट्स. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पीजेंट्स वो लोग होते हैं जिनका सोशल स्टेटस बहुत लोअर होता है, जो बहुत पुअर होते हैं, जो इकोनॉमिकली और सोशली फिनेंशियली बहुत वीक होते हैं. तो किस तरीके से पीजेंट्स को और उनका पोजीशन वर्स्ट कर दिया गया ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज देयर, और उन लोगों ने एग्रीकल्चर अपना एक सोर्स बना लिया था जिसके थ्रू वो रेवेन्यू गेन कर रहे थे. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स सर्वाइव्ड ऑन वेरी स्मॉल इनकम्स. बहुत बहुत कम जो था उनका इनकम था. वाई? बिकॉज देखिए, जो कंपनी था उसका रेवेन्यू डिमांड बहुत था. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ब्रिटिशर्स को अपना आर्मी, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते थे. इसलिए वो सारा खर्चा कोशिश करते थे सारा जो रेवेन्यू है वो एग्रीकल्चर के थ्रू गेन करें. और जो हमारा जो इंडियन कल्चर है, इट इज़ फुल ऑफ सोशल कस्टम्स, मैरिजेस हैं, फेस्टिवल्स हैं, सब कुछ हैं. सो द पीजेंट्स वर नॉट एबल टू एन्जॉय एनीथिंग इन देयर लाइफ एक्सेप्ट to work miserably on the land and to fulfill the evil desire of the Britishers. So they compelled the peasants to either sell a part of their land or borrow money. कि या तो आप वो कहते थे, हमें तो ब्रिटिशर्स बोलते थे we need revenue, either you sell your land या you borrow money. So what is our culture? जिसमें in our culture peasants and the farmers feel that land is their mother. भारत माता बोलते हैं ना, और धरती माता भी हम बोलते हैं. यूजली आपने ये वर्ड सुने होंगे. तो they used to feel like that कि why would we sell our mother like this? तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता था कि वो पैसों को बोरो करें मनी लैंडर से, और वो भी वो टाइम पे नहीं कर पाते थे. एंड दे ट्रैप्ड अंडर द विशियस सर्कल ऑफ द डेट. The money lender mortgaged the land of the peasant and charged very high rate of interest. Once in debt, most of the peasants were unable to repay the money. Once landless, the peasant found it impossible to support the family. The new revenue collection systems created a class of zamindars who completely indifferent. जैसा कि रेवेन्यू सिस्टम बना दिया था जिसमें ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, दे हैव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर एंटाइटल्ड टू टेक द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स और द फार्मर्स. सो दे आर ऑल्सो, आई मीन द ज़मींदार ऑल्सो ओनली वांटेड द रेवेन्यू एंड द मनी फ्रॉम द फार्मर्स. उन लोगों को वो कोई नए इरिगेशन फैसिलिटीज़ और कोई भी और चीज़ें उनको अवेलेबल या प्रोवाइड करके नहीं दे रहे थे. दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट. Their only aim was to extract the maximum from them, and they made no effort to provide peasants with tools, agriculture implements and fertilizers. The failure of rains in any year led to famines. और किसी साल अगर ऐसा होता था कि रेनफॉल ठीक नहीं आई है तो और प्रॉब्लम हो जाती थी फार्मर्स के लिए. व्हाट शुड दे डू? अगर प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो वो क्या सेल करेंगे और क्या अर्न करेंगे. Farmer found it impossible to support himself and his family during such times, and to make matter worse, there was no other source of income as well. They used to only work on land and earn money. If the land is not responding, there is no crops, what do? They are under the vicious circle of the debt at the same time to pay the amount to the money lender, to the zamindars and to the British as well. They have no money to look after their family or eat sufficient food. Is it clear? Continuing with the next is the cultivation of cash crops. I want to explain you what is a cash crop. Cash crops are those plants that people grow to sell and not to eat or use for themselves. It is clear from it.
वॉट आर कैश क्रॉप्स? जिसको कंज्यूम नहीं करा जा सकता, जिसको खाया नहीं जा सकता. दे आर ओनली मेंट टू बी सोल्ड इन द मार्केट. दे आर ओनली ग्रोन टू बी सोल्ड इन द मार्केट. Continuing from the book, this is the British thought that the peasants could grow cash crops besides yielding revenue. What Britishers thought at that time, why not to grow cash crops? Yielding revenue हमारे पास बहुत अच्छा आएगा. कैसे? So by late 18th century, the company encouraged the cultivation of cash crops like opium and indigo. I'm going to show you the pictures of both these cash crops. How do opium looks like and how do indigo looks like. The picture on the screen you're seeing is of opium. This is a cash crop. The next picture is of indigo. What is indigo? नील. जो आपने देखा होगा बहुत बारी ऐसा होता है, when your mother used to wash the clothes, वो white clothes में नील लगाती हैं. ब्लू अब बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं एंड पाउडर्ड फॉर्म में भी आते हैं. वो इसी कैश क्रॉप से कन्वर्ट किए जाते हैं. आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो कि उसको कन्वर्जन जो है उसका किन किन चीज़ों में यूज़ आता है. You can see the picture on the screen, the flower, the indigo, it is converted into powder and then the jeans and the clothes have been dyed in this color, blue color. ये जो आप प्लांटेशन का पिक्चर देख रहे हैं, इसको ड्राई करके तब इसको ग्राइंड करा जाता है तो ये पाउडर्ड फॉर्म में आ जाता है. और अब ये कुछ कंपनीज जो हैं आजकल हैं वो उसको लिक्विड फॉर्म में भी प्रोवाइड करा रही हैं. So the British also forced the peasants to crops like jute in Bengal, to grow crops like jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces, which is currently known as Uttar Pradesh, and cotton in Maharashtra and Punjab. They forced the peasant to sell them at low prices. कि आप उसको एक कम प्राइस पे बेच दीजिए. What is important to grow the cash crops, जिससे वो मार्केट में सेल करके रेवेन्यू कमा सके. In course of time, this practice resulted in a decline in the production of food grains and acute shortage of food supply. Obviously, this is the main drawback of the indigo cultivation in India. Britishers forced farmers to grow the crops like which is not be usable to eat, and it is used to sell in the market. तो fruit supply का तो shortage होना ही बिल्कुल normal है. Let us take an example of Neil or indigo. This is written in your book, the case study Indigo Cultivation. How did it came into existence? The picture on the screen you're seeing is the graphic. It is the presentation how the indigo cultivation came into existence in India. Right? Indigo is a blue colored dye obtained from the indigo plant. It is used to dye clothes. There was a great demand for it in Europe. Industrial revolution has been transformed the textile industries of England. Britain needed indigo to dye clothes. ब्रिटेन को इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एंड अर्निंग होती थी, तो उनको इंडिको जो था, उनको जो ब्लू कलर था वो डाई करने के लिए चाहिए था क्लॉथ के. और जो इंग्लैंड का क्लाइमेट था वो बिल्कुल भी इंडिको ग्रो करने के लिए सूटेबल नहीं था. इट इम्पोर्टेड इंडिको फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ एंड नॉर्थ अमेरिका, जो उनको बहुत कॉस्टली पड़ता था. However, the collapse of indigo plantation in these regions during the late 18th century forced Britain to look the supplies from other areas. उन्हें लगा कि क्यों ना we should opt some other areas for indigo cultivation. To meet its growing demand for indigo, Britain turned to India. उन्हें लगता था India is an agricultural country, and that too for the cultivation of indigo, the fertile land is required, which is ample in India. बहुत सारी है, उसकी स्कासिटी हो ही नहीं सकती, उसका कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं. सो द कंपनी फोर्स द पीजेंट्स इन बंगाल एंड बिहार टू ग्रो ओनली इंडिगो, नो अदर क्रॉप. बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th century, about 30% ऑफ द इंडियन इंडिगो वॉज एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड. आपने देखा 30%, उनको बोल दिया कि दूसरे जो आपकी यील्डिंग क्रॉप्स हैं उनको तो आपको ग्रो ही नहीं करना है, आपको इंडिगो पे ही सारा जो है वो एम्फेसिस करना है. And there were two systems for indigo cultivation, that is the knit system and Roti system. Continuing from the book, in the knit system, peasants produced indigo on their own fields. knit system में जो peasants थे, जो farmers थे, वो अपनी ही land पर indigo को grow करेंगे. That was a condition. And in Roti system, peasants took lands on rent. वो rent पे लेकर करेंगे उसको.
right? There were many drawbacks with this system of indigo cultivation. Why? It can be only grown on fertile land, that I've already told you. Fertile क्या होता है बेटा? Fertile land means जो जिस पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जा सके, जिसकी सॉइल बहुत अच्छी हो, फेवरेबल हो. Indigo plantation was labor and capital intensive. A peasant need to invest in bullocks, plows for indigo cultivation. जो सीजन था इंडिगो कल्टिवेशन का was सेम एज इन राइस कल्टिवेशन. मतलब जितना टाइम राइस कल्टिवेशन के लिए चाहिए उतना ही इंडिगो के लिए चाहिए. बट पीजेंट्स वर फोर्स टू पे अटेंशन टूवर्ड्स द इंडिगो कल्टिवेशन ओनली. और जो राइस था वो नेग्लेक्ट होता था, इसलिए फूड सप्लाई का शॉर्टेज भी था. Moreover, as most of the villages were densely populated, large-sized plots were also scarce. The peasants were not willing to grow indigo on these lands, as indigo caused damage to the fertile soil. एक प्रॉब्लम था, there was a major drawback for indigo cultivation. If it has been grown on a land, वो एक या दो बार ही आप उस पर ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद वो लैंड डेड हो जाता था, उसका फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी. मतलब आपने एक लैंड पे इंडिगो कल्टीवेशन किया, 2 बार किया, उसके बाद आपको कहीं और शिफ्ट होना ही पड़ेगा. इससे करके धीरे धीरे वहाँ की जो लैंड थी बिहार और बंगाल के विलेजेस की, वो स्पॉइल होती जा रही थी क्योंकि उनकी फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही थी. अंडर द रियोती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द पीजेंट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद सट्टा टू एक्वायर लैंड फॉर इंडिगो कल्टिवेशन. सट्टा कौन? जो लैंड को रेंट पर देते थे, उनको बोलते थे तब. According to this contract, a peasant had to cultivate indigo on at least 25% of the land. जो लैंड उसने लिया उसके 25% पे उसको इंडिगो ही ग्रो करनी है. दैट वाज अ कंपल्शन. बाकी क्रॉप वो दूसरे पर ग्रो कर सकता है. The price paid by British buyers for the indigo was not very high. It was very less. कुछ था ही नहीं. This resulted in endless डेप ट्रैप फॉर दी पीजेंट्स. जो थे वो बिल्कुल, देखिए जो रोती सिस्टम था वो तो ऑलरेडी यही था कि उनको रेंट पे लेना था लैंड, तो दे हैव टू लुक आफ्टर इट, और उसके लिए उनको रेंट भी पे करना है, तो उनको कुछ प्राइस भी नहीं मिल रहा था ब्रिटिशर्स से. दे आर अगेन अंडर द विक्शियस सर्कल ऑफ द डेप्ट. द इंडिगो कल्टिवेटर वॉज ऑल्सो नॉट फ्री टू सो अदर क्रॉप्स. आप और कोई क्रॉप्स पर पे अटेंशन ही नहीं करेंगे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. Even he could not grow because he found that indigo crop had exhausted the fertility of the soil. Now, the last is the Indigo Rebellion. What is this? तब बहुत ज़्यादा हो गया. तब farmers और peasants के बाद they have no other option. What to do now? So, they wanted to fight against it. Rebel means fight करना. The oppressive system associated with indigo cultivation resulted in popular unrest and rebellion. So, the Ryots refused to pay the loan to the planters. Ryots ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने बोला कि हम इतना रेंट पे नहीं कर सकते. People attacked the indigo factories and they used all kind of arms and ammunition such as bows, arrows. तीर कमान होता है, खुरपा होता है, डंडे होते हैं, जो भी था. They wanted to fight against it. उन्होंने सब पे हमला किया. Women even used pots and pans to fight with them. So, the Zamindars were angry because their land had been forcefully taken away for the indigo plantation. Zamindars की position और ख़राब हो गई, as the peasants and labor doesn't want to work for them now. तो Zamindars thought कि हमारा land की fertility already indigo plantation करा के ख़त्म कर चुके हैं, not अब हम क्या करेंगे. They openly supported the Ryots. The indigo revolt was received support from Bengali intelligentsia. British government did not want another rebellion. ब्रिटिशर्स को इससे थ्रेट हो गया. उन्हें लगा कि इंडियंस आर वेरी एंग्री नाउ एंड दे वांट टू फाइट. So the British government did not want another rebellion. It led to the appointment of Indigo Commission. The commission held the planters guilty. It stated that indigo production was not profitable for the Ryots. एक commission बिठाई गई, एक meeting हुई, कुछ important लोग उसमें involved हुए, and they realized that this is very rude behavior towards the planters and the peasants to forcefully grow only indigo. So this is wrong and it is not profitable for us also. Commission told the Ryots to fulfill their existing contract and do not take up new. उन्होंने कहा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, आपने लैंड रेंट पे ले रखा है, सम अमाउंट इज ड्यू, गेट योर सेल्फ फ्री ऑफ दैट, और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करिए. After the revolt, indigo cultivation was banned in Bengal. The planters shifted their base to Bihar. Exploitation of indigo cultivators, however, continued. Even the introduction of synthetic dyes which could be used in place of indigo did not help. एक synthetic dye, artificial dye भी बनाई गई, but it was not that much up to the mark. जो indigo काम करता था dye का, वो नहीं कर रहे थे, इसलिए peasants को प्रॉब्लम तब भी फेस करना ही पड़ा.
Then to eradicate the system, many revolts broke out in Bihar, and even on Gandhiji's return from South Africa, peasants from Bihar persuaded him to come to Champaran and witness the plight. उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि आप आकर बिहार, बंगाल और चंपारण में आइए और देखिए कि जो वो हैं पीजेंट्स हैं और जो फार्मर्स हैं उनका पोजीशन कितना ख़राब हो गया है, वो लोग कितना डेब्ट के नीचे हैं, एंड दे वेरी मच पुअर नाउ. So, this visit in 1917 led to the beginning of Champaran movement against the indigo planters. So, students, I hope that I have cleared each and everything of this chapter. You can go through the chapter and you can go through the video as well. If there is any problem, we'll discuss in the Zoom class for sure. Till then, happy learning.